Hello students, good evening. This is me, Dr. Kalas. Welcome you all to this session. In this session, we are going to discuss some important themes on environment, ecology and climate change. As we know, in every year, the Odisha Public Service Commission in its preliminary examination is asking 10 to 15 numbers of questions directly or indirectly from this chapter. So, understanding the basic demand of the examinations, we will discuss some of the important facts, some of the important concepts of the environment and climate change. So, let's get started. Before going to the main topic, we should have a broader understanding about the term ecology and what actually ecology means. So, ecology is a word that is associated with the environmental study, layman concept. So, this ecology is such a word that is derived from a Greek word. Never confuse, dear friends. It is a Greek word. Never confuse it with the Latin or French or English word. So, it is a Greek word derived, whose meaning a word that is oikos. Another word is logos. Oikos means to live in, or a place to be live in. So, where we generally reside or where we generally uh, keep our life sustained, that type of store, that is the place, that place is known as oikos, and logos means story, means it's basically the story of our own birthplace or own place where we live. So the term ecology is such. The term ecology has been given by a German, very important, he is German scientist, zoologist, never confused with botanist or any microbiologist, nothing. He is a zoologist, German zoologist, whose name is Ernst Haeckel, जहाँ का ना आर्म्स हैकेल थिला जे केटा को 1869 रे तार नेम देइथिले. बहुत छोट जिनस किंतु एटा को आपण प्लीज केयरफुली मन रखिए. So in this chapter ecology, generally we found the interactions, a continuous interactions between some of the factors. Like in the ecosystem, we have the atmospheric air, the hydrosphere, that is water, and the lithosphere, that is the earth. So we suppose a man is there who is associated with the lithosphere, hydrosphere as well as atmosphere. So these three organ or three segment of the ecosystem, they continuously interact with each other. So they forms a complementary type of cycle. So next coming. So in the ecosystem, we have two components, broader understanding. One is the component which has life, jar जीवन अच्छी, which do not have life, which that is non-living. The life part is known as biotic part, and the non-living part is non-biotic part or abiotic part. But to say a means absence of life, right? So under the abiotic components, we have the sun and its ray. First, the nutrients, the cycles like gas cycle, water cycle, mineral cycle, heat, all the things, stone, water, heat, all these things, they form the abiotic component of the ecosystem. Whereas the segments, those who have life, that is the producers, that is tree, animals, microbes, fungi, viruses, all the things, they forms the biotic component of the ecosystem. That's why the ecosystem has two parts, that is the biotic part, another is the abiotic part. Next, coming to a new concept, then what is the PAR? So the full form, it is abbreviation of the word. Please student write down it. Photosynthetically active radiation. So what it basically means? As you know, there is sun, ଆମର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, and there is earth where we live. Generally, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ
some amount of rays is falling on the earth, right? Those amount which is falling on the earth, maximum more than 50% get reflected back to the environment, right? So out of those part which is written by the earth is radiated to the micro environment, means especially for the plants, for the warmth of the animal, the environment, etc. For this purpose, some amount of heat is transmitted by the earth, right? So out of less than 50% of the radiations, only 2 to 10% is received by the plant. So it 2 जो radiations से plant receive करे, से plant से radiation से heat टाको utilize करेगी, the sun टाको utilize करेगी, what the plant prepares food for itself and for others. So the process of making food by utilizing such radiations is known as photosynthetically active radiations. Very basic concept. So generally those radiations wavelength which is falling under in between 100 to 700 nanometer wavelength, they are generally categorized by as the photosynthetic active radiations which is utilized by the plant to prepare food. So if the process of preparing food by the plant is known as photosynthesis, right? In this photosynthesis process, very simple, we have carbon dioxide and water. By utilizing the UV ray or the sun ray in broader sense, we are preparing the glucose. Very basic, the basic unit of energy, glucose. So its formula is C6H12O6. So never forget. So the main component is the carbon dioxide and the water, and the final component is the glucose, for which energy is required. It is a very basic layman concept. So dear students, never forget this word. So here the important thing is 400 to 700 nanometers, and 2 to 10% of the power is utilized by the tree or any plant species, right? Then coming to the trophic structure of the ecosystem. So what does it basically mean? As we know, we have plants. We have discussed the plant produces food for itself and for the sustenance of others. So this food is consumed by some segment of the ecosystem. Those are known as primary consumers. So primary consumers, they themselves they can prepare food. So as the plant prepares its food for its own as well as for the others, it is known as autotrophs. Auto means self, trophs means nourishment. सेमती ट्रॉफिक, ट्रफ गोटे वर्ड आसी तार मीनिंग है नरिशमेंट. वेरी बेसिक थिंग. सो किए सो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मीनिंग किए क्या नरिशमेंट करुच्ची केमी से परस्पर सहित गोटे कम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप से एस्टाब्लिश करुँच. दैट्स व्हाई इन अंडर प्राइमरी सेगमेंट और सेक्शंस वी हैव द फाइटोप्लैंक्टन्स, the grasses and the trees. Never forget the phytoplankton, always have been asked in examinations. Under primary consumers we have the zooplanktons. Never forget it is a primary consumer. Grasshoppers and cow. Again zooplankton, grasshoppers, cow एमाने जो ग्लूकोज नहीं कि एमान निजर बॉडी ग्रोथ करते एमान को किए खाइबो ना बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ. These species are known as secondary consumers. And under tertiary consumers we have the man, the lions and the carnivores. Generally carnivores means those species which generally take flesh as their principal food, right? So this is the basic structure. So primary producers, primary consumers, secondary consumer, tertiary consumer. The two important things is zooplankton, phytoplankton. Never forget. Next coming to the food chain and what is the food web. Very simple. Suppose this is a tree.
गोटे फल अच्छी से फलटा को आम मनीष खाइले मनीष खाला मनीषर ग्रोथ है डेभलपमेंट है तार आफ्टरवर्ड मनीष डेथ हो गला ताको भलचर्स खाइले सो जड़े प्रिपेयर कर जड़े खाऊँ पुणी सी ताठू ताकू पुणी आउ जड़े खाऊँ ताकू पुणी आउ जड़े टेक ओवर कर सो दिस टाइप ऑफ ए लिनियर फैशंस ऑफ इंटरेक्शंस और type of relationship with respect to the food habit, it is known as food chain. You can clearly understand here the sun is there, energy it is producing, and by utilizing that energy the grasses they produces some amount of glucose or some or for its development by से grasses and बढ़ती से grasses को then grass suffers खाऊँ झिंटिका मैंने खाऊँ से झिंटिका को पुणी एगन श्रीव माउस रैट एम सब खाऊँ एगन से माउस को पुणी ऑल खाऊँ भलचर्स खाऊँ बर्ड्स खाऊँ so this type of relationship is known as the food chain process. So at some point of time the primary consumers that the grasshoppers becomes the prey and the producers become it is the predator and the grass become prey. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଗ୍ରାସ୍ ସଫର ଆଉ ମାଉସକୁ କି ଶ୍ରୀକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ହେଇଯିବ ପ୍ରିଡେଟର ଗ୍ରାସ୍ ସଫର୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେ ସୋ ଆଟ୍ ସମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ପ୍ରେ ବିକମ୍ସ ପ୍ରିଡେଟର ଏଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରିଡେଟର୍ସ ବିକମ୍ ପ୍ରେ very simple concept. So this is the grazing food chain. Grazing food chains we are generally found in the grassland ecosystem. The tree is there, the cow is there. Tree जहाँ सब produces cow खाइबो, cow जहाँ सब produces. So this type of relationship it is known as food chain in grazing ecosystem. Like in deltoid ecosystem, suppose cow चल काउ को सपोज ह्यूमन खाऊँ तार मांस खाऊँ बीफ खाऊँ तो ह्यूमन जो सी मरी जाऊँगी तार डेड बॉडी को आइदर भलचर्स खाऊँ किंबा ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाऊँ when there is putrefactions or when there is any degradation of the body under or by some microbes, it is known as detritus food type of chain. Very simple concept, right? Then coming to the 10% law, it's a very important law. As we know, we have some trophic level 1, some trophic level 2, some trophic level 3, trophic level 4, right? Suppose at the base level generally we have the tree, then the primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. So when listen carefully. Suppose the sun is providing light to the producers. Suppose it is providing 100. Suppose I am taking an example 100 kilocalorie. 100 kilocalorie suppose आम रहा producers level रे से जितेबाला ताको जो प्राइमरी कंज्यूमर्स खाइबो से तार किछि पार्ट्स से खाइबो किछि ऑर्गन को से खाइला परे कोन होची तार किछि एनर्जी ट्रांसफर्स हबा दरकार, राइट? केते परसेंट ट्रांसफर जनरली गोटे ट्रॉफिक लेवल आउ ट्रॉफिक लेवल जो एनर्जी ट्रांसफर हुए ना 10% रिडक्शन से जाए. सपोज 100 किलो कैलोरी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पाखे अच्छी देन या पाक आसला सी 10 किलो कैलोरी हो. एगेन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो पुणी प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाइब से एगेन 10% रिडक्शन इन एनर्जी हुए. सपोज 10% कम होगा आप 1 किलो कैलोरी आसो. एगेन टर्सियरी कंज्यूमर्स जो आसी जाऊँगी तापक से 1.01 किलो कैलोरी. Then so this 10% reductions in the energy flow from one trophic level to another trophic level is known as 10% law of energy, right? A 10% law of energy generally 4th to 5th trophic level पर तार किसी relevance रोहानी मतलब मीन्स एनर्जी टा बहुत कम हो जाए. Are you getting my points? So this is the 10% law of the energy. Next coming to the food web. So food web आमे जो देखले food chain गोटे simple गोटे linear type of fashion से चली थला. Suppose tree को cow को man को vultures. Simple type of relationship. But here under the food web, when the food chain is getting complicated or the food chain is so complex, it is known as food web. web माने जाके जाल
बढ़िया जाल जमी बहुत छंद बहुत कम्प्लेक्स टाइप थाए सेमती जस्ट इमेजिन व्हेन द फूड चेन बिकम मोर कम्प्लेक्स और मोर इट इज interconnected between many species or better to say it is more complex, it is known as food web. गोटे देखो प्लांट को सी स्क्वेरल भी खाऊँ गुणचूसा भी खाऊँ डियर भी खाऊँ राबिट भी खाऊँ ग्रास सपोर्ट्स भी खाऊँ एगेन ग्रास सपोर्ट्स को बैड भी खाऊँ फ्रग भी खाऊँ स्क्वेरल को ऑल खाऊँ सो देखो एमती टाइप गोटे राबिट को स्नेक भी खाऊँ राबिट को फॉक्स भी खाऊँ so all are interconnected or interdependent or they are connected with each other so complexly. So this type of relationship among the creatures or among the different trophic level is known as your food web. Next coming to some pyramids, some important concept of the environment ecology. it बहुत सारा क्वेश्चंस गत प्रति वर्ष गोटे दुटा क्वेश्चंस आपनकर आसे. So pyramid is a structure that we found in Egypt. Generally, pyramid structure केमती थाए. So it has a broad base. It has a narrow or better say tapering end. Right. So ये जिनसटा को आमे बर्तमान ecological concept को understand करिया दरकार. Coming to the so three types of pyramid we have found with respect to the ecology and environment. We have pyramid numbers. राइट pyramid of number केम देखिए सपोज गोटे एग्जांपल दूची इन द सपोज pyramid नंबर इज टू टाइप्स गोटे अपराइट गोटे इनवर्ड और इनवर्टेड. अपराइट pyramid टा एमती थिवो शेप इज लाइक दिस बट इनवर्टेड pyramid इज जस्ट लाइक दिस तार स्ट्रक्चर टा डाउनवर्ड थिवो. एटा हम इथर कौन देखिए गोटे एग्जांपल दूची फॉर एग्जांपल गोटे सपोज गोटे ग्रासलैंड इकोसिस्टम रे बहुत सारा ग्रासेस रहउची ताको खाया पे जतकी नंबर्स ऑफ ग्रास होती डेफिनेटली कम परिमाण रे काओ थिबे से काओ को अगेन खाया पे काओ नंबर देखले को लायन भी बहुत कम नंबर थिबे से लायन को खाया पे अगेन वल्चर्स कंपेयर टू लायन बहुत कम परिमाण थिबे. सो देखंतु नंबर्स उटा जनरली कमी ऊपर को जता जाउछन नेक्स्ट टॉपिक लेवल को जब जाउछन नंबर टा कमी जाउची. सो वी हैव ए ब्रॉडर बेस बट द नंबर एट द टॉप इज फ्यू. सो जते नंबर कांसेप्ट हमर सेटा पिरामिड ऑफ नंबर से कांसेप्ट को हमें कहि पर. सो अंडर ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट. कमिंग टू द इनवर्ड केतबेला होची और इन्वर्टेड केतबेला होची. सपोज कमिंग टू योर मेराइन इकोसिस्टम समुद्र इकोसिस्टम जोटा बहुत सारा फिश अच्छा राइट बहुत सारा मेराइन बेटर टू से मेराइन न कही आम बेटर सपोज गोटे ग्रासलैंड भी धरते से ग्रासलैंड माइक्रोबिकली आम देखिए बहुत सारा माइक्रोब्स अच्छा तो पैरासाइट्स जहाँ कहते से पैरासाइट्स को खाया टिक्स सब अच्छा से टिक्स को खाया सब डिफरेंट काओ सॉरी क्रो बर्ड्स सब अच्छा. सो देयर नंबर एट द बेस इज वाइड व्हेन इट इज कमिंग टू द डाउनवर्ड it is the number is declining. So it is a type of inverted type of pyramid of numbers. Then coming to the pyramid of biomass. Pyramid of biomass এই কনসেপ্টটা जो आउची गोटे बायोमास कहले हम कोन बुझछंती बायोमास हला ने सबुजाक ऑर्गेनिज्म को आमे नबा द ड्राई मैटर को जनरल बेस करके नहीं परिया. सो गोटे ऑर्गेनिज्म आम सपोज बॉडी रोची बॉडी दुटा पार्ट रोची गोटे वाटर रोची और ड्राई मैटर रोची राइट. आमे काहे कि पिरामिड ऑफ नंबर बदले पिरामिड ऑफ बायोमास यूज करंती बहुत इंपोर्टेंट जिंस होला कि पिरामिड ऑफ नंबर ता सब जगह सुइटेबल होएनी. So it is very difficult to assess the numbers also in many a times. So pyramid of biomass टा को हम जनरली एक्सप्रेस करंती ग्राम पर मीटर स्क्वायर गोटे केते ग्राम गोटे मीटर स्क्वायर रे अछि हम ताको ए यूनिट रे करंती.
right? Again say wala pyramid of biomass is always two types. Another is your upright pyramid, another is your downward pyramid or inverted pyramid. मन रखिथिबे आइदर pyramid of number or pyramid of biomass जेटा अपराइट रहिबो सेटा ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डिनोट करियो आ जेतेबेला आपनकर इन्वर्टेड रहिबो सेतेबेला आपनकर सेटा मेराइन इकोसिस्टम को डिनोट करियो मु जस्ट प्रिलिम पर्सपेक्टिव को आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल नेक्स्ट कमिंग टू द पिरामिड ऑफ एनर्जी अंडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी वी हैव मन रखिते पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट एनर्जी सब अपराइटली फ्लो करे always it is the most important questions one of the 10% law is applicable to the energy right so the energy flow हुए out in some this the sun is giving the solar energy the plant that photosynthesis करूची the food prepare करूची the solar energy is converted to the chemical energy काहे ना ठीक chemical produce होची the glucose the chemical substance it is produced so the solar energy is transferring to the chemical energy so as well as I would have questions pade so pyramid of energy is an example of biomagnification so eta paravarti slide re padhiya so what is biomagnification some next slide re padhiya so biomagnification is the tatra gote jinsa gote concentration of the energy the amount of energy is declining and it is getting tapered or it is getting concentrated at the higher trophic level this is the so this period of energy also represents the biomagnifications okay so the pyramid of biomass very important in sea is also generally inverted I have already told because biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton तो फाइटोप्लांक्टन्स जोड़ा रोची जो मैंने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आम जो पढ़ी तांको नंबर्स अधिक रोची कंपेयर टू देयर नंबर द फिश द प्राइमरी कंज्यूमर्स तांकर नंबर कौन कंपेयर टू द फिश फिश को किए खाइब मनीष मैंने रोच तार बायोमास मनीष बायोमास तो अधिक रही मनीष किए खाइब द कार्निवर्स और मे बी द डेट्रिवर्स तांको नंबर कौन तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड so never forget it is very important next coming to the new concept that is the ecological decay right so the ecological decay it अपन definitions please मन रखियो এটা बहुत important directly examinations रे पचार दिए the role that an organism takes in the ecosystem is known as decay suppose I am a human being and I am working or I am doing some work in my environment so the environment under which I am working suppose I am a state government employee I am working under this government or I am working in the government office so this is my ecological decay I am very active in my environment very concept suppose a fish is there so the fish is very active in the pond some fish are very active in the marine ecosystems tiger is very active in jungle so the jungle is the ecological decay for the tiger so it is so ecological decay it is unique it is very distinct for each species so under the ecological decay the animal performs reproduces maximum very important that's why the ecological decay has been the area of interest by many conservationists or many biologists to go for conservation of the organism कहीं ना से जगह ऑर्गेनिज्म बहुत एक्टिव थाए से जगह ही आम ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व एज वेल एज कंजर्व करि परिबा राइट सो कंजर्वेशन द कांसेप्ट आछि आपन गोटे देखिबे इन सिटु कंजर्वेशंस एंड एक्स सिटु कंजर्वेशंस इन सिटु कंजर्वेशंस आम जरा होम रे तांकर ओन होम रेंज होम क्लाइमेट रे आम तांको रखिया जेंति नेशनल पार्क होची वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होची ऑल दिस थिंग्स अंडर एक्स सिटु कंजर्वेशंस आउटसाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट रो तांको रखिया तो आर्टिफिशियल क्रिएट करबे जेंति जू गुडा को होची लैबोरेटरी रे आम तांको रखिया
All these things are the classic examples for ex situ conservations. Are you getting my points? So it is a very important concept in your ecosystem. Next, coming to a new concept, what is the homeostasis? So homeostasis means the maintenance. So maintenance of बहुत टाइम एग्जाम्स पचारे व्हाट इज द होमियोस्टासिस. जदि आप बायोलॉजिकल सेंस देखिए होमियोस्टासिस इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर. आम बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट. आमको जो एनवायरनमेंट छोड़ आइदर हट को भी छोड़ा जाऊ कि कोल्ड एयर छोड़ा जाऊ आम बॉडी ट्राई करू ए टेम्परेचर मेंटेन करिया. दैट्स व्हाई वी आर होमियोस्टैटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिजम्स गुड़ाक सपोज ऑन बॉडी टेम्परेचर गोटे सपोज गोटे एक्स अमाउंट रोचे सपोज से कोल्ड एरिया को गले टेम्परेचर सांगे सांगे खसीज. हट एरिया को गले और ह्यूमिड एरिया गले टेम्परेचर सांगे सांगे बढ़े देवे. सो दे एडजस्ट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएशंस ऑफ द एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल टेम्परेचर सहित से एडजस्ट कर वेरिएबल एनवायरमेंट टेम्परेचर सहित. सो जो ऑर्गेनिजम मैंने ये चेंज कर पारती पोइकिलोथर्म्स कहती. So it is a very important concept. So homeostasis as well as poikilotherms. Homeostasis maintenance of own body temperatures. Precisely कहता हुआ लगता है endotherms बोलते कहती. Right? So next coming to a new concept, what is the biome? So ecological niche may be a terrestrial, may be a oceanic, may be any aerial habitat, may be किसी भी पारे. But when the niche is confined to the terrestrial part only of the biosphere, it is known as biomes. Biosphere, you just imagine this is a world, right? So in this world there are many landmass are there. It is maybe tundra, right? It may be taiga, it may be savanna. आप सब जोग्राफी रे पढ़ी थी. सो व्हेन सो डिफरेंट लैंडमास डिफरेंट सब तांकर वेजिटेशन तांकर निजर ओन क्वालिटीज रोची. सो से लैंडमास गुड़ाक से टेरेस्ट्रियल पार्ट गुड़ा गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम से बियर करती कि से रिजाइड करती से ऑर्गेनिजम्स कि से वेजिटेशंस सेटा तार बायोम होता है. So the biome concept is different from the ecological niche. So biome is so biome is a subpart of your biosphere. So different biomes रहिबो. जेंति आपनको तुंद्रा रे लैंड मास से अलग वेजिटेशंस रहिबो, साभाना रे अलग रहिबो, आपनकर टाइगा रे अलग रहिबो, ट्रॉपिकल रीजन अलग रहिबो, टेम्परेट रीजन रे अलग रहिबो. So different regions have different landmass and has different vegetation. So the biome is a sub part or it is a small part of your biosphere reserve. So there are many determining factors. जमती कहली आपनको क्लाइमेट रोची, आपनकर ह्यूमिडिटी रोची, एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स रोची, एयर वेलोसिटीज रोची, राइट? योर हाइड्रोस्फीयरिक प्रेशर्स कौन सी जगह कौन कंडीशंस रोची. All these things that determines the nature of the biome. Again, no two biomes are alike. So tundra never be equated with the savanna or the temperate regions. So the biome is distinct with respect to its character. So never forget. So biome is a terrestrial part. Never. So never. So aquatic ecosystem केबे भी हो परिबनी as part of biome. Always we consider the terrestrial part only. So आम जो जिनस आम देखिले. So it is Arctic. So this is the Arctic region. Tundra कहली, subarctic regions taiga, the temperate regions जो रोची, deserts रोज भी temperate grassland, temperate forest. So देखो tundra is different for your desert, taiga is different for your savanna.
ट्रॉपिकल एरिया जो आस डेजर्ट आस सावाना आस रेन फॉरेस्ट भी आस सो ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट्स वन बायोम एटा गोटे बायोम सेटा गोटे बायोम डेजर्ट गोटे बायोम राइट ऑल आर डिस्टिंक्ट नेक्स्ट कमिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट इज द डिकम्पोजिशन मुझे कहूली आम ट्रॉपिक लेवल जो ऊपर जाती लास्ट रे आमर डिकम्पोजिशंस बढ़ी हुए decompositions to what set us मन रखिए सो associated with the some microbes broader definitions microbes under आउची maybe by bacteria maybe by fungi maybe by virus maybe by protozoa so bacteria is under protozoa it is by any rickettsial organism ये सब जिनस द्वारा आमर बॉडीटा डिकम्पोजिशंस हुए आमे जानिछे आम बॉडीटा सम कार्बन से तैयारी होता है कार्बन जो कार्बन तैयारी सी जार कैपिटल आम तर डिनोट करती से कार्बनटा तैयारी करे सब ऑर्गेनिक मैटर सो किछि आइदर प्लांट हो कि एनिमल बॉडी हो जो माइक्रोब्स मान द्वारा से अटैक हुए सेटा डिकम्पोजिशन हुए डिकम्पोजिशन अल्टीमेटली आमको ऑर्गेनिक मैटर से तैयारी करती आम देखी ग्रोथ ग्रोथ लेवल आम ऑर्गेनिक सॉइल यूज कर ऑर्गेनिक सॉइल मैंने कौन सब पचा सढ़ा पत्र को आम डिकम्पोजिशन करके यूज कर सो दिस इज सम द मेन द चीफ एम इज टू क्रिएट और टू फॉर्म द ऑर्गेनिक मैटर सो इट इज कैरिड आउट by invertebrates that is my fungi bacteria viruses the rickettsial organisms all the things so decomposition is a rotting process सड़ी जाए से जिनसटा the steps here the fragmentations the leaching the catabolism the humifications and mineralizations we are not going in detail into the every segment of the things right you just remember this so this is in classic example of your organic rich soil formations आप जानते गोटे गछ पत्र पत्रटा को आप जो एटा कौन कर एटा को फ्रागमेंटेशन होची तो राइट तार लिचिंग होची लिचिंग होसला से ह्यूमिफिकेशन होची राइट सर आर्थवर्म तादर एंट्री से जस्ट 6th 7th क्लास रे आपण जिनसर प्रोसेसटा जानते सो माय चीफ एम इज टू कन्वे यू दैट द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक रिच सोइल इज बेसिक एम ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोसेस नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट बायोमैग्निफिकेशंस जोटा कि आम डिस्कशंस करथिले इन द एनर्जी जो आम एनर्जी फ्लो एनर्जी पिरामिड डिस्कशंस करथिले सेही टाइम रे हम बायोमैग्निफिकेशंस प्रोसेस को मैग्निफाइड होची माने सपोज गोटे जिनस आप इंडियन पॉलिटी पढ़ुं आप 6th 7th क्लास पाठ पढ़ुए आपको जस्ट डेमोक्रेसी पाठ पढ़ुं डेमोक्रेसी को आप 10th 12th क्लास पढ़े डेमोक्रेसी को बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि व्हाट इज पार्टी सिस्टम व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हाउ डेमोक्रेसी एस्टाब्लिश थ्रू इलेक्शंस 11th 12th जो आप PhD करेंगे से आप कौन एक्चुअली डेमोक्रेसी कौ मैंने सब पार्टिसिपेट कर नेचर केमी बिहेवियर स्टडी कौन है सब जिन मैंने आप जी सब ऊपर पाठ पढ़ा जी आपंकर से पाठटा मैग्निफाइड हो जाऊँगी मैंने क्रिस्टल क्लीयर अंडरस्टैंडिंग रोचे सेमितिका गोटे गोटे इकोलॉजिकल पिरामिड गोटे और इकोलॉजिकल बेटर से ट्रॉपिक लेवल रे आमर से जो आम कि प्रोसेस को आम ऊपर को उठी उठी जाऊे ना से जिनसा आइदर एनर्जी हो कि किसी केमिकल सब्सटेंस हो जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को उठी उठी जीव से मैग्निफाइड हो मैंने से तार परिमाणटा कमी 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 जीव लास्ट ट्रॉपिक लेवल को आसो लास्ट मुंड को आसो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी थी बट इट हैज एनी डेल्टोरियस इफेक्ट आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो दिस प्रोसेस इज नोन एज biomagnifications so this biomagnifications is known as bioamplifications right so generally under the biomagnification process whether the energy or chemical it goes upward and it get concentrated at the tissue level of the tertiary consumer especially at the fatty tissue level
right? So some of the examples I have collected from different sources, that is you may write down it or you may take a screenshot of this slide. An example is polychlorinated bisphenols, which who, which is in the news. It is used as insulators and transformers the fire retardants. ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ତଳ ଉପରକୁ ଲେବୁଲରୁ ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ସେଟା ଆଟ୍ ଦି ଆପେକ୍ସ ଲେବୁଲରେ ସେଟା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। another substance is there polynuclear aromatic hydrocarbons, जोटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अच्छे सेटा भी सेमती नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मूव करी जाउछि। हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी कॉपर कार्डमियम क्रोमियम लेड जिंक पिंक टिन ट्राइब्यूटिलिन ये सब जिनस गुड़ा आपंकर फॉर्मेशंस कर। अनदर थिंग इज दिस सियानाइड यूज्ड इन फिशिंग एंड गोल्ड ब्लीचिंग, सेटा भी बायोमैग्निफिकेशन से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को बढ़ी जाएगी एट द एंड एट द टॉप इट इज गेटिंग कॉन्सनट्रेटेड व्हिच इज very fatal effect, very deleterious effect. So some of the biological magnifications super jam discussions for that upon dear students please write down it, please write down it. It is very important, right? So first is your DDT को हम जानले एग्रीकल्चरल पर्पस रे यूज करते, राइट? सो ए DDT को मन रखिथे सेटा त आमे एग्रीकल्चर पर्पस यूज करने सेटा फास्ट पॉन्ड इकोसिस्टम को जाउची। पॉन्ड इकोसिस्टम सेटा को आपनकर फिश माने खाउछन, फिश को ह्यूमन टेक करूची। सो ह्यूमन जतरा खाउची तार मेनली तार हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होची। तो फीमेल माने खाउछन तार एस्ट्रोजन जे हार्मोन इज देयर दैट इज एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्बेंस होची। द सर फीमेल माने मेल माने खाइबे मेल मानकर एंड्रोजेनिक प्रॉब्लम तार मेल सेक्स हार्मोन कहंती तार डिस्टर्बेंसेस तार कंसंट्रेशन डिस्टर्बेंसेस होची। सो देखो केमिति गोटे पॉन्ड इकोसिस्टम रो केमिति जे टापरिंग हेगिना गोटे ह्यूमन पाखरे पहुंची, ह्यूमन पाखरे जता कंसंट्रेट हे जाउची तार एनी एडवर्स इफेक्ट सब हमें देखिया को आउची। सो दिस इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ द DDT। नेक्स्ट कमिंग टू द मर्क्यूरी, राइट? सो मर्क्यूरी डा जनरली गोटे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पड़े आपनकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो इंडस्ट्री हो कि वेरी बेसिक आम बर्तन जो यूज कर CFL बॉल यूज कर जो घरे घरे से हेवी अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी यूज करते। जनरली सब जो इंपोर्टेंट लिखि रखुद मिथाइल मर्क्यूरी आउट ऑफ मेनी फॉर्म्स ऑफ मर्क्यूरी मिथाइल मर्क्यूरी इज डेंजरस, इज मोस्ट डेंजरस मिथाइल मर्क्यूरी, राइट? सो मर्क्यूरी गोटे डिजीज हुए मन रखिए जापान रे हितला जो सी रे फिश मैंने खाइना सेटा को तांको देह रहिला तांको देहरु ह्यूमन को गला माछ को केंदी गला ना ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक कॉज फैक्ट्री इंडस्ट्री रो गला वाटर बॉडी फिश रो ह्यूमन ए वेरी वाइड नोन डिजीज, ए वेरी पेक्युलियर डिजीज, टीमोट मानी माता डिजीज, सॉरी मीना माता डिजीज। It is due to the toxic effect of the mercury and a classic example of biomagnifications, right? Like that arsenic, it forms a fatal effect on your central nervous systems, on your renal functions, all these things will see affect करूची। नेक्स्ट कमिंग टू योर लीड, राइट? लीड जोटा कि मेनली लिवर आ किडनी डैमेज करुची, ह्यूमन मानकर फर्टिलिटी को डिक्रीज कर दोची, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और न्यूरोमस्कुलर डिजीज भी सी बाहर करुची, राइट? ए लीड सब मन रखते हेयर रे कंसंट्रेशन होगी रहे। देन कमिंग टू सेलेनियम मर्क्यूरी जोटा कि आम डिस्कसन करते मर्क्यूरी मुझे किसी एग्जांपल साइट करने चाहिए जोटा कि मुझे आपनकर लिखी ना another in the cadmium a toxin a substance in cadmium जोड़ा गोटे डिजीज दिया इटाई डिजीज जोटा हायर ट्रॉफिक लेवल जो ह्यूमन देखा जो नाइट्रेट
गोटे वर्ष क्वेश्चन पढ़ी ओपीएससी रे इट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम राइट कोयला जो एरिया रे से जगह ब्लैक लंग or it is known as pneumococcus. Are you getting my points? Another thing is there trans fat गोटे बर्तन नुआ कॉन्सेप्ट आसुची बर्तन आप जब पढ़ी थे आपनकर जनरल नॉलेज रे आम पाखे सपोज ऑयल अच्छी ये ऑयल को आम बहुत दिन बाहर रखीदा देन सेटा रानसीड हो जाए मैंने ऑयल डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल बाहर तो ये रानसीडिटी प्रोसेस को आम चेक करने ऑयल रे बट इंस्टेड वी आर नाउ यूजिंग हाइड्रोजन आयन so we are adding hydrogen ion to the oil to avoid rancidity so this this is known as trans fat so formation of trans fat so this trans fat has the cardiovascular effect heart attacks ये सब problems वो बर्तन आसुची so dear student please do remember it next coming to the biomagnification and the bioaccumulations so as we have discussed what is actually biomagnifications and bioaccumulations both are interchangeably used biomagnification को पर accumulation को बेसिक डिफरेंस है कि biomagnification सब बड़ी प्रोसेस टा ऊपर को it always goes upward magnified हो जो बायो accumulations टा सपोज कैडमियम डाम खाइले सेटा सपोज सेटा गोटे ट्रॉपिक लेवल रे ही accumulate हो जो सेटा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जता जीव हम जो biomagnifications कहबा तो it is confined to one trophic level only or when we study in one trophic level only it is known as bioaccumulations very simple things so generally the biomagnification the bioaccumulations रे कोन जो से केमिकल सब्सटेंस ता हमर टिश्यू लेवल रे डिपॉजिट हुए और गैदर हुए स्पेशली द फैटी टिश्यू एतकी जस्ट अपन मन रखतन नेक्स्ट कमिंग टू ए न्यू कांसेप्ट दैट सक्सेशन एंड द सेरी आपड़ जो गोटे पहाड़ जाइए कि जंगल जब आप जाइए जदि बड़ बड़ जंगल जाइए गोटे जिन मार्क करेंगे देखिए जंगल को ऊपर जंगल एमती अच्छी जो फास्ट खोज देखिए छोट छोट बुदा रे ऊपर गले देखिए गोटे गोटे मीडियम साइज गछ रे देखिए पूरा बड़ बड़ गछ रे इन सब देखिए डिफरेंट एट सर्टेन इंटरवल द पैटर्न ऑफ द वेजिटेशन गेट चेंजेस right so this type of changing behavior of the vegetation is known as succession so the succession process start with the initial stage right the initial stage is known as the pioneer plants से pioneer plant दिने पुणी आस्ते आस्ते बड़ हे से बड़ plant हुए so the initial stage which is known as pioneer and the mature stage जो बड़ बड़ गछ सब थी बड़ बड़ सब सिस्टम्स थी सेटा कहते क्लाइमैक्स स्टेज इंपोर्टेंट ये दुटा ही आप मन रखते द स्टार्टिंग पॉइंट इज द पायोनियर स्टेज एंड द मैच्योर स्टेज इज क्लाइमैक्स स्टेज राइट सो आम देखिए प्रति स्टेज रे चेंजेस होची तार मॉर्फोलॉजी तार वेजिटेशंस नेचर चेंज होची तार वेजिटेशंस थिकनेस चेंज हो जाउची वैरायटी डाइवर्सिटी ऑल चेंजेस सो दिस इज नोन एज सेरी राइट इट इज very important things किसी कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट इज सक्सेशन एंड व्हाट इज सेरी सो पायनियर एंड द फॉरेस्ट Next coming to the new concept, what is biotic potential? So biotic potentials ने जनकर केते capacity, right? So biotic potential it denotes the maximum rate at which a population can increase when resources are unlimited and environmental conditions are ideal is termed population's biotic potentials. माने हैला suppose ए गोटे एरिया अछि एते किछि ऑर्गेनिजम्स रहउछंती राइट जतरे तांको फेवरेबल क्लाइमेट एनवायरनमेंट
आंकर फूड ऑल द नीड्स फुलफिल से माने निज निज पॉपुलेशंस को से इंक्रीज करेंगे थ्रू मैटिंग or the fertilizations, better to say. So it is maximum when all the needs, when all the demands get fulfilled, whether it may be environmental conditions, whether it may be food conditions, whether it may be any sorts of conditions, right? So this condition, so this is known as biotic potential. So there are many factors that are associated with these factors. So राइट सो गोटे एरिया जो सब सब जिन आप एनवायरनमेंट टेम्परेचर्स फूड शेल्टर ऑल दी थिंग्स आर आइडियल से गोटे से एरियाटा डिटरमाइन करे से केते नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सी रखिपर निज पाखे सी फीडिंग कर सी सस्टेन कर सो व्हेन द नंबर इज कमिंग व्हेन द नंबर कांसेप्ट इज कमिंग इट इज नोन एज कैरिंग पोटेंशियल केते नंबर से रखिपर एंड द एबिलिटी टू keep such amount of species, that ability is known as potential. The number is known as carrying capacity. Very important things. So the carrying capacity depends upon your the amount of resources which is there. Suppose आपनकर भुवनेश्वर कहीं populations increase करूची तार environment तार climate तार job avenues सब जिनस से available आपनकर अछि. It is ideal. Right, that's why it is the carrying capacity. Right, number को अपन denote करूचे. Next coming to the economic ecosystem services. What is general economic ecosystem service? माने ecosystem हमको कौन कौन सर्विस दोची माने हम ecosystem रे कौन कौन सर्विस पाउछंदी. Simple thing, nothing. It is the benefits from the ecosystem. Whether the benefits is in from the provisioning, in terms of regulations, or in any forms of cultural services. एत इंपोर्टेंट जिनस यहीटा को आम मिलेनियम इकोसिस्टम आसेसमेंट गोटे प्रोग्राम यही प्रोग्राम जरिया आम इकोसिस्टम सर्विसेज कॉन्सेप्ट को आनी जोटा को 2001 रे यूनाइटेड नेशंस इनिशिएट करते. सो आम देखा इकोसिस्टम सर्विसेज गुड़ा सब कौन कौन राइट इकोसिस्टम सर्विसेज आपंकर आसुची. सो with respect to soil formations, carbon storage, sequestrations, right, habitat constructions, primary productions रे कौन कौन आसुची आपनकर evolutions of the species and diversity रे भी आपन जानि पारी. secondary productions कौन shelter water chemical modifications कौन. so ecosystem services all the services that we are getting आपनकर soil formations होउची आपनकर tourism sector से बढ़ुची food fuel livelihoods recreation activities all n numbers of things आपको nature provide करछि. so this is so this concept, so it is ecosystem services. Next coming to ecotone and the age effect. suppose good example हम start करिया. what is the ecotone? आपण जे केबे जाइथिबे जदी suppose wetland आडे जाइथिबे suppose केबे गोटे एरिया जाइथिबे देखिबे suppose गोटे एरिया रहउछि एटा गोटे लैंड रहउछि और या को माड़ी किना यार किछि पार्ट्स को किछि वाटर अछि लैंड वाटर टा के संपर पळुछि लैंड टा जेंति सेमति अछि. देखिए ए जे ट्रांजिशन जोन गोटे एग्जांपल दोछि. सो लैंड इज इकोसिस्टम वाटर इज इकोसिस्टम ए जे मझा मझी जगहटा जोठा कि लैंड भी अछि वाटर भी अछि. सो इट इज ट्रांजिशनल जोन between two ecosystem. एई जोन टा कहंदी एई जोन रे आमे कोन करंदी ए वैरायटी ऑफ स्पीशीज पायंदी. से स्पीशीज रे कोन लैंड इकोसिस्टम रे हेति वाटर इकोसिस्टम रे भी हेति से हम दुटा इकोसिस्टम में सर्वाइव करि पारि. राइट से टाइप ऑफ स्पीशीज गुडा को आमे इकोटोन स्पीशीज कहंदी और से ट्रांजिशनल एरिया को हम इकोटोन कहंदी. से एरिया टाको हम इकोटोन कहबा आ एथि जो स्पीशीज उडा मिलंती ताको हम इकोटोन स्पीशीज कहबा. राइट सपोज लैंड इकोसिस्टम तर 5टा टाइप रो एनिमल देखाउतले आ वाटर इकोसिस्टम सपोज 7टा प्रकार एनिमल देखाउतले. किंतु एक्सपेरिमेंट देखाई जी रिसर्च कराई देखाई जी
এই ट्रांजिशन जोन रे जो इकोटोन एरिया रे मोर देन लैंड और वाटर तो देखा जाए it may be 17 18 20 so when the number of the species in the ecotone area is higher from either of the main ecosystem when the number is increases it is known as age effect right very simple concept किसी तरह बेसी चिंता करार नहीं नंबर टा दुटा इकोसिस्टम अपेक्षा ट्रांजिशन जोन नंबर टा स्पेसीज नंबर टा बढ़ी जाउछि देन इट इज नोन एज एज इफेक्ट सो क्वेश्चंस आसे एज इफेक्ट इज लिंक्ड टू द इकोटोन स्पेसीज और इकोटोन राइट आउट क्वेश्चंस आसे आपनकर वेटलैंड गुडाक So, kahar example, ecotone. Directly लिखिए, देखिए किसी confuse होगा ना. So, the ecotone is also known as zone of tension. कहीं ना सी ए zone रो भी ए इकोसिस्टम tension रखुची, ए zone रो भी सी tension रखुची. So, this is known as zone of tension also. Right? Next, coming to the broader understanding, what is individual, what is population. जैसे गोटे species थी वो individual, ता से species वाला बहुत उड़े थी बेता को populations. ता जैसे इना suppose खाली रोइला गोटे सिंह suppose रोइला खाली हरिण रहा से हरिण भाया डिफरेंट पपुलेसन जब गोटे एरिया रहा कम्युनिटी राइट कम्युनिटी जो से किसी प्लांट्स वेजिटेशंस ऑल द थिंग्स जो गोटे ब्रॉडर वे जो बहुत सारा बहुत देखिए तो आम कह इकोसिस्टम्स बायोम जब ये इकोसिस्टम जो गोटे पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल वाटा मन रखिए टेरेस्ट्रियल एरिया रोचे गोटे गोटे वर्ल्ड गोटे पार्ट आम कहते बायोम समस्त प्रकार बायोम सब प्रकार टेरेस्ट्रियल एरिया को लेकिन आम या बायोस्फीयर रिजर्व सो द बेसिक यूनिट इज द इंडिविजुअल देन पॉपुलेशंस देन कम्युनिटी देन इकोसिस्टम देन बायोम देन बायोस्फीयर नेक्स्ट कमिंग टू द बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव आज वी नो द बायोस्फीयर गोटे दुटा क्वेश्चंस भी आपनकर आसे सो व्हाट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व आम जानते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो बायोस्फीयर रिजन्स रे डिफरेंट रिजन सब अच्छी सो सब यूनिक ताको आमे कहते बायोम सो यही कॉन्सेप्टा द बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्टा हमर यूनेस्को देइतला प्लीज स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड दिस बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय द यूनेस्को थ्रू ए प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एमएबी प्रोग्राम कहंदी इन द ईयर 1971 इंडिया जो आम यूनेस्को प्यारिस सेसन रहा प्यारिस कॉन्फ्रेंस इंडिया तो 1986 तो आडप्ट कला जस्ट रिमेंबर सो एपाई गोटे बायोस्फीयर को आम क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब क्राइटेरिया सब रही राइट से बायोस्फीयरटा गोटे डिस्टिंक्ट दरकार तार ओन भैल्यू थी दरकार से भलनरेबल स्पेसीज थी दरकार राइट ये बहुत सारा क्लास बहुत सारा क्राइटेरियंस रोचे जो क्राइटेरियन टाक आप यूनाइटेड नेशंस से डिसाइड करुच्ची राइट देखिए बायोस्फीयर जो देखा जाए गोटे गोटे बायोस्फीयर देखिए किसी गोटे तीन टा वे डिवाइड कर तीन टा जोन रे विभक्त कर गोटे कोर एरिया राइट कोर एरिया जोटी सेठी खाली सेठी कहीं जाई परिबनी the entry is strictly bad or the entry is strictly prohibited right एठी जो एनिमल्स फन्स रहिबे कि वेजिटेशंस रहिबे ताऊ कि डिस्टर्ब कर ताऊ कि टच करि परिबे नै so this is the core area so no human interference is allowed here generally a core area रे हमरो there is act that is wildlife protection act 1972 अप्लाई होता है इट बहुत स्ट्रिक्ट लॉ स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ एनवायरनमेंट लॉ अप्लाई होता है से कोर एरिया को लगी ना तो एडजेसेंट एरिया गोटे अच्छी बफर जोन जो बफर जोन रे स्ट्रिक्ट एनिमल आसीपर एके से निज स्ट्रिक्ट एरिया को जापर निजर ओन जोटा कोर एरिया को जापर सो ये बफर जोन रे आमे ये बफर जोन को अलाउड रेस्ट्रिक्टेड अलाउ थाए से बफर जोन जो रिसर्च और एजुकेशनल पर्पस आम कर
सर्टन लिमिटेड टूरिज्म लिमिटेड फोटोग्राफी आलो करा जाए क्वेश्चंस पड़े एजुकेशनल और रिसर्च पे आम कौ जोन यूज करती राइट जनरली बफर जोन क्वेश्चंस पड़े वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौ जोन एप्लिकेबल थाए कोर जोन आउ एगेन बफर जोन को लगी ना किसी ह्यूमन सेटलमेंट्स थाए कि मनुष्य रही कि ग्राजिंग एरिया थाए यही सब जिनस आपंकर ह्यूमन सेटलमेंट्स थाए तो यहीटा कहते ट्रांजिशन जोन प्लीज स्टूडेंट्स मन रखिए ये ट्रांजिशन जोन जो लोक मैंने निजर आंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो एम भर माड़ी चलती आ डिस्ट्रॉय कर चलती जंगल टाक दि बायोस्फीयर टाक से यही स्टेज रे यही ट्रांजिशन जोन रे एजुकेशन दरकार और इनफॉरमेशन दरकार रिगार्डिंग द एनवायरनमेंटल कंडीशंस से कम्युनिकेट हवा दरकार सो 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 दिस ट्रांजिशन जोन इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ कोऑपरेशन. So this transition zone is also known as zone of cooperations. Right? जदि देखिया गले इंडियन कॉन्सेप्ट रे इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे we have one second we have इंडिया रे 18 मन रखिए 18टा बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी ये बायोस्फीयर रिजर्व टाक आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देखा जी से आपंकर 18टा लिखाई अप टू 2000 आई थिंक 11 एतकीटा मात्र कराई क्वेश्चन आसो फास्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौटा सांगे सांगे आप नीलगिरी नीलगिरी कौन अच्छी तमिलनाडु कर्णाटका एज वेल एज केरलार बॉर्डर अच्छी नीलगिरी केबे होता 19 I think this is the old one it is around 1983-84 से established होता please student google it I am actually not actually sure about the date of declarations of the biosphere regions of the Nilgiri area. Then latest है 2011 जो डिक्लेयर करला पाना बायोस्फीयर रिजर्व्स लास्ट है एमपी रे अच्छी मध्य प्रदेश रे अच्छी सो आप जिन मन रखु सो फास्ट कोटा लास्ट कोटा आ इंडिया रे केतरा अच्छी बायोस्फीयर रिजर्व ताको किए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करुच्ची एतकी जस्ट बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. सो आज मैं पार्ट 1 वीडियो रे किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जमती कि आपनकर इकोसिस्टम इकोटोन एज इफेक्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स दी ट्रॉफिक लेवल कॉन्सेप्ट राइट दी फूड चेन फूड वेब यही सब जिनस आम जस्ट बेसिक जिनस गुड़ा सब जानले. सो इन पार्ट 2 वीडियो आम बर्तन सो नेक्स्ट जमती कि आप डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एक्ट रोची डिफरेंट सब आपंकर डिफरेंट कन्जर्वेशन कन्वेंशंस गुड़ा रोची डिफरेंट सब प्रोटोकॉल्स सब रोची से विषय में डिस्कशंस करिए. So, if you video first time then press the bell icon and press the subscribe button so that when I am going to post a new video on any topic you may get notifications. So until the next time, stay tuned with my lectures, stay in home, stay safe, God bless, thank you, good night.